Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yeah, I am live now. So, hey everyone, I'm Vikrant Dhawan. I am here today. Basically, let's talk in Hindi. Uh, I am here majorly because ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ I'm working on a project ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I am kind of stuck. इसको इन्हों में मुझे proper complete करना है. Let me show you where I'm standing right now in this. So Android Studio. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ जो मेरा UI है इट लुक्स लाइक समथिंग दिस सो इतने मैं जो एग्जिस्टिंग मेरे लोग्स ने वो मैं इतने शो करना चाहना वा जो मैं ऑलरेडी कर रखा है ना वो ये की है अगर मैं वर्कआउट 5 चूज़ करूँगा तो वर्कआउट 5 जाएगा अगर वर्कआउट 4 चूज़ करूँगा और ये जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा हूँ लेट स्टार्ट अगेन सो npm स्टार्ट जो तक स्टार्ट होंदा है अच्छा वाह वेरी फास्ट इन्नी देर तक इतने लोड हो रहा है so let me just go in a way कि let me just go in a way कि मैं इन्हू क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करा ओके सो आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੈ this okay so my username is this password actually ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ because you could misuse it but obviously ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ वाह आप पासवर्ड सेट किया मेरी वेबसाइट बना रहा हूँ इतने मेरा पासवर्ड गलत हो रहा है अगर आप पासवर्ड नहीं है तो फिर की है यार मतलब कैन यू इमेजिन हद कर रखी है मैं अपनी वेबसाइट के पासवर्ड भुली जा रहा वो भी अपने अकाउंट का भी नहीं कुछ रैंडम है कुछ कर रहे हैं तज का जस्ट मैं पासवर्ड भूल रहा सो इफ आई थिंक अबाउट okay so I'm stupid actually don't worry my mistake only चलो मुबारकां जी मुबारकां हो गए आप लोग इतने मुंडिया की हो गया तेनू बंदल को गया है वापस क्यों नहीं आ रहा प्रॉपर let me just close it start it and it already fucked it up so let me just close it and let me just start it again because it's just wasting our both time so can I kill it okay ज़रूरत नहीं पै रही okay so I can just start it like this I don't need to go anything this so again की हो रहा है इन्हों मेरी स्क्रीन पे क्यों वापस आ रहा है इट्स वेरी वियर्ड
apply change font सेलर फिंगरप्रिंट नहीं यार इनमें से तो कुछ नहीं चाहिए था। हाँ शुक्र है ਵੀਰੇ शुक्र है जुगाड़ देख रहे हो भाई ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਅਰੇ ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ ਸੌਰੀ ਮਾਈ ਬੈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਰਕਆਊਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਚੇਂਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ task.md exercise selection data tracking and visualization add exercise logging functionality आता हो गया ना workout management page and this oh I think मैं updated store नहीं कर रखा let me just update it right away stop showing footer when writing input done ठीक है एडिंग विजुअलाइजेशन टू इनपुट वैलिडेशन टू इनपुट्स आनी आप जे कीता ਆਪਾਂ डेवलप वर्कआउट मैनेजमेंट पैकेज वर्कआउट मैनेजमेंट लेट मी जस्ट चेक ओके सो हाँ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। let me create a sub task in it ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੀਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡ ਲੇਆਊਟ ठीक है it's just a one day task okay so it's just a I'm sorry it's just a one day task for us and ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ कुछ तो है मैंने आई एम नॉट श्योर की चलो लेट्स कंटिन्यू वन डे टास्क स्टॉप शोइंग फोटो एंड दिस नहीं रीनेम द layout better and obviously this hasn't been done so let's go with this वैसे बार वाली चीज़ हो चुकी है लेट्स अपडेट इट एड एक्सरसाइज लॉगिंग फंक्शनैलिटी विद इन द वर्कआउट मैनेजमेंट सो ਅਸੀਂ ਲੌਗਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਟ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਆਈ ਕੈਨ ਲੌਗ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ choose to go in a different exercise let's say cycling so it is going to change oh okay so I need to make a box like अगर मैं उसे लिखना शुरू करता हूँ तो जो नाम है वो उत्ते आ जाए okay so let me make it to true but there is a subtask make input box like when write data in input box then field name comment top सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਡੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ आई डोंट थिंक वो ज़्यादा बड़ा टास्क है 1 to 2 days good enough even 1 day is good enough but I generally like to go with some buffer that make me not to rush a lot ठीक है okay so just update it okay yep so it's done then implement workload and management feature
ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਐਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡੇਟਾ ਵਿਊਇੰਗ ਫੀਚਰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਪੂਰਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਲੌਕਡ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਵਿਦ ਕਿ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਬਲੌਕਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਰਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੀ ਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਟਪ 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 ਟਪ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਵੀ, हाँ लोडिंग पेज इन शोइंग वर्कआउट प्लान्स। एक्चुअली वर्कआउट प्लान्स में इतने भी पा रखे हैं, बट लेट्स ट्राई टू सो वर्कआउट प्लान्स ਅਸੀਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। I'm thinking of creating a separate task for it only. Let's try it out. वैसे तो इट शुड बी एन आइडियली अ सब टास्क, बट अब 3-4 जगह तो यूज़ हो रहा है, फिर सारे तो सब टास्क क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स बेटर क्रिएट अ बिगर टास्क। सो आई थिंक दिस विल टेक 2 days easily, ideally 3 days, because first thing I know me, and second multiple जगह पे change है। So when fetch, so instead of making it just for workout plans, I will create it all over the code so that मैनू बार बार सेम चीज़ों का टाइम वेस्ट ना करना पाए। ठीक है। when fetching data from when fetching data from db at loading in a meantime, so to make it not slow, so to not show any random data to user। I am thinking random तो ज़्यादा wrong data is make sense, and obviously इससे आजा कितना नहीं है। and I am thinking एक और task बन सकता है। that task could be add animations, but I am thinking कि that is anyway beautification, so beautification task आज मैं पा नहीं रहा। so beautification task ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ तो ਆਪਾਂ देख लांगे। अजय तक just chill। task MD अपनी अपडेट हो चुकी है। आई एम थिंकिंग आई शुड सेव जो मैं अभी तक चेंजेस कर चुके हैं ताकि मैनू अब बार बार ना करना पवे। सो गेट एड -p, सो ये मैं हजे तक तो ही अपडेट कर रहा। सो इट शुड बी यस। ओके, वर्कआउट रूटीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ वर्कआउट log ऐड ਕੀਤੇ ਨੇ। यस, यूज sync workout। let me just go big। reset state। okay, so this is yes, and this is also yes। workout preview on a yes। I'm adding a screen so that also look good।
So I'm removing one action which is console and adding a navigation. Obviously it looks good. Import, I don't care. Start after. Ooh, huh? Obviously, and it's actually a completely new query that I have written. So, and I haven't tested it properly. So I think जब मैं मेरे changes proper start करूँगा तो वो test हो ही जाएगा. So actually I don't care. So I can just do yes right now. Just go ahead. Okay, आधा पहुँचने ही गीता है. Okay, so सारे ऐड हो गए नहीं. Let me just write a git commit. So messages adding new tasks and okay, so here will be the adding new tasks and and creating basic page for workout log screen. Oops. Adding new task and creating a basic page for workout log screen, and here it would be okay, so let me just check the git log first log type and fetch queries. Yep. Okay, so git push. So this is done. Let me just ignore it. And sorry, ma'am, interrupting in between, but I would really appreciate अगर ਤੁਸੀਂ comments ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ improve ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ. I know I'm very new at it. मतलब मैंने start ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਕੁਛ दिन ही होए ने, not even weeks. To be precise, I think it's a 4th day. So obviously मैं बहुत mistakes कर रहा हूँ. Actually मैंने पढ़ के थोड़ा बुरा भी लगूगा, but I really need to improve in it because I'm enjoying it. I don't care कि मैं live ਵਿੱਚ actually एक watching है, but I don't mind one watching, but I really want to improve on this कि मैं कित्थे कित्थे गलत कर रहा, मैं समझा नहीं पा रहा या मैं ओवर थिंक कर रहा वां या फिर जो चीज़ मेरे लिए ऑबवियस है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ. I would really appreciate it. Obviously I'm noob, so your comment will be helpful. तो मेरे दिमाग से एक लाइन तो आ रही है, चलो बोल देने हैं. आई अंडरस्टैंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब टू मी बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता, बट आई विल ऑलवेज बी इन डेट कि अरे अगर मैं थोड़ा बड़ा बन गया कि दीज आर द पीपल हु इनकरेज मी और टॉट मी कि मैं बड़ा बनया. सो एक लाइन है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. So tell me what is the change you want to see in the world. I will, hopefully you will do the same, and but I ensure I will be the person जो ये changes कर सके. बाकी ज़्यादा फैंसी गल्ला हो गया. कोड आप हजे स्टार्ट भी नहीं किया, so let's focus on the code. Okay, एक तो पहला I'm thinking of creating a YouTube playlist of songs जो आप कोड कर दे सुन सके. I'm thinking I'm wasting the time actually, because in this way I'm not learning anything, I'm not doing anything, I'm just wasting the time. I think some other day hopefully, but आज तो कुछ कर लिए
ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨਸ ਫੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਕਆਊਟ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਰਿਕ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਫੋਰਮੈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਰਕਆਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਦੈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇयर इज़ अ ਚਾਂਸ ਕਿ ਆ ਵਰਕਆਊਟ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸੇ DB ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਸਲੋ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ 1 or 2 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਅਗਰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਟ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਡੇਟਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਓ आई थिंक इंस्टेड ऑफ relying on converted exercise because of बहुत ज़्यादा data I can rely on selected workout. Let me just try if it makes sense. Okay, it is working, so I think that is the better solution, right? Because of it cut data ਨਾਲ लिंक करेगा, then I think I don't need a use memo here, but की फ़र्क पैंता है, अगर परफॉर्मेंस इशू आएगी तो देख लिया जाएगा। सो नाउ आई वांट टू शो कि इन दैट एक्सरसाइज तुसी सारे सैट्स का डेटा देखना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर सैट का डेटा देखना चाहते हो। सो फॉर डैट मैं ऑलरेडी एक DB क्वेरी लिख रखी है, मैं पिछली किसी लाइव विच शो कर रखा सी। लेट मी जस्ट गो इन अ वे कि यूजर DB, इन द यूजर DB I know I need to proper structure करना database queries नो, but right now I'm slightly focused on कि ਕੋਡ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਲੋਗਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦਿਸ ਆਲ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਰ DB 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਬਟ अगर मैं नहीं भी दूँगा तो इट्स ओके बिकॉज आई रियली वांट कि DB क्वेरीज मैं तो हटा के एक बैकएंड सर्वर बनावा एंड इन्होंने चीज़ों को रिप्लेस करदा मैं API कॉल तो अगर मैं इवेंचुअली इन API कॉल ਨਾਲ रिप्लेस ही करना चाहना वा दैन इट इज़ रियली बैटर कि मेरे कोड रेस्ट ऑफ द कोड ਲਈ आ चीज़ां एक ब्लैक बॉक्स होन। एम आई मेकिंग सेंस? कोई है ही नहीं, सिंगल व्यू। तो लेट्स कंटिन्यू। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, यूज़र ID, वर्कआउट, एक्सरसाइज इज़ ऑप्शनल बिकॉज अर्लियर आई यूज टू थिंक कि मैं एक्सरसाइज ऑल भी पास करांगा, but now I'm
thinking that always let user to choose exercise because कौन अपनी सारे लोग देखना चाहता है. Actually I am a kind of person जो देखना चाहेगा, बट इस सिनेरियो ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਡ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. Obviously you can tell me कि ਮੈਨੂੰ what should I do. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ let me select the default limit as 10 not 5 because anyone जो भी देखना चाहता है वो लास्ट 10 दिनों का डेटा तो देखना चाहता ही है. तो I can fetch on that on top of it, but then I don't have information of all the sets. I just have information from last 10 records and another set the data की है. आई नो सेट IDs बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हैं. एक तो मैक्सिमम बंदा 10 सेट लगा लेगा, ये तो ज़्यादातर नहीं होएगा. तो आइडियली मैंने सेट्स की इन्फॉर्मेशन में अलग तो स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं यही दिखाना चाहता हूँ ना, एक्सरसाइज एंड सेट्स. बट मैनू एक्चुअली ये थोड़ा जा इशू है कि मैं फायरोस यूज़ कर रहा हूँ एंड सॉरी फायर बेस यूज़ कर रहा हूँ एंड फायर बेस फ्यू अपडेट्स लो नहीं करता या तो प्रॉपर नहीं एंट्रीज बनेगी, वो पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट करना अलाउ करता है. सो जो मेरा वर्कआउट लॉग है, द इशू इज़ जो मेरा वर्कआउट लॉग है let me go to the structure. Okay, so this is my structure right now. So I'm still thinking of कि logs है, एक field log होवे and there should be a field called queryable data. बट द इशू इज़ कि मेरा स्ट्रक्चर इतना है कि मैं लास्ट 10 फैच करा एंड उन्होंने जो मैं सारी एक्सरसाइज नेम्स शो करा. उप्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਸਟ पर्टिकुलर एक्सरसाइज का डेटा फैच कर ला इंस्टेड ऑफ कि मैं एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लास्ट 10 एंट्रीज लेके आऊँ. तो अगर मैं यूज़र ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂ कि वो एक्सरसाइज चूज़ करे and let's say but we are not allowing user to not do some exercise. So we are saying that last 10 workouts का data है. We are not saying कि last okay, so that actually we want to show कि तुसी इस दिन अपना वर्कआउट स्किप भी कीता है. सो अगर वी आर सेइंग कि तुसी इस दिन अपना वर्कआउट स्किप कीता है ਤਾਂ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ID empty ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ. Actually, I like this approach. I have obviously one concern with it, but concerns ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. So this is a code, this is a part, everything is looking good.
Okay, 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 okay. Para, 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 para. So I need to do this query. So let me just go with the 10 data first. Let's go with the just first 10 entries, first page. मोर पेज जो वाला कोड है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ oh so the issue with automatically selecting the first exercise is लेट्स से यूज़र है जो अपना वर्कआउट चूज़ कर रहा है then we are making unnecessary db query right now so let's say यूज़र ने स्क्रॉल करके एक फर्स्ट चूज़ किया थर्ड किया एंड भी गलती ना क्लिक होकर सेवंथ भी कर लिया we are making 3 db queries जिथे आप on other way we can show user a button select workout नहीं sorry show data oh actually I'm liking this approach कि इस तो बाद एक बटन है show data या let's say show logs when user is clicking it then मेरे को थल्ले ऑप्शन होए कि वो सारे सेट्स का डेटा शो करना चाहता है एक पर्टिकुलर सेट का डेटा शो करना चाहता है जीनियस not at all but genius let me just make it a backup file also where it is because मैं फिर unnecessary चीज़ां remove करने दी सोच रहा copy as in backup okay so it's 10 April 25 okay so this is done oh लास्ट टाइम आप फाइल ऐड ही नहीं हुई अच्छा चेंजेस हजे गए ही नहीं है उत्थे गिट विच ग्रेट सो द रीज़न वाई आई एम डूइंग इज कि लेट्स मी हैव अ फ्रैश लुक मैं एक्चुअली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड कोड ते रिलाई कर रहा हाँ कि मैं की डेटा शो करना है एंड ये मैनू इशू आ रहा है कि I am getting fixated on the approach I want to use. So मतलब मेरे को obviously मैं एक डमी कोड लिख रहा सीगा because डमी कोड एक certain way ना लिखा सीगा I am so much inclined कि वो डमी कोड ही वर्क करे उस तरीके ना ही मैं नवा कोड लिखा एंड उसदे नाल इशू ये आ रहा है कि बायस आ रहा है वुड से आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड उसदे नाल मेरा बायस आ रहा है नाइस ओके 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 ओके
So ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਬਟਨ ਨਾਲ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ whenever I'm doing, I just need to pass these data somewhere, right? So let me just rely on creating a one more use state that will give me the option or understanding that I have constant Sherlock's. Okay, so to rely on it. So to just rely on it, I just need to do few things first. So I have a use state called show data, and there will be a I'm thinking of making it as a async function instead of use data, because anyway I have to fetch the data multiple times. So that will go something like this. Copilot, do your thing. Regulation. Okay, so there will be some kind of this where I'm doing set workout log. I don't need this right now, and format. So what I'm doing here is I'm calling a fetch log, where the fetch log is selected workout value, exercise value, return set workout logs. Yes. So here I'm just checking that if I have any selected workout or selected exercise. If it is not, then just return it. Otherwise, chat Copilot is smart. So to get a user data, I just need to make it a user and something, right? So that would be constant user
uh, I don't want your data, bro. Wait. Okay. It's a get only. I just need to go to the save. Okay. So how I'm fetching the user ID? Okay, I'm passing it around. Hey, bro. Yeah, this is the code. So I just need to fetch it from here. I don't need you. Okay, so okay, so I can just use this user UUID. And what is the issue here? Argument of type is not a parameter. I just need to make sure. Let me just add check here. If user is not missing requirement required parameter, yeah, if what ID is not there, then this. Okay. If user ID is not available, so it would be sure dot one select work and exercise. ओके वैसे तो कभी होएगा नहीं बट लेट्स से इन सम वर्स्ट केस सिनेरियो show dot alert user is not logged in. Nice. And then I'm going with the workout or value, whatever is workout. When I don't want to select the limit, but if we have to, then whatever value I'm changing here is not required. I'm just passing as it is, and instead of just console.errors fetching, okay, and make it a false. And then there will be this button of so here what I'm doing is if it is loading, otherwise show data, and let me see how it is looking.
Why it is not loading again on the Android? Okay. Toggle. Let me just do one more thing to just verify कि साडा ही इशू तो नहीं है, साडा ही इशू है. I just need to load it again. Ta-da. Ta-da. So my email is this and my password is done, login. Okay, so I can just remove this part because obviously why do we want it? Okay, so I'm not liking the spacing here. I'm actually spacing is very bad. So toggle button, it's a tertiary button. Instead of this, I think I can go with just button. Okay, and then small. No, I think padding should be medium. Okay, and border should be border should be the border radius here, and data is center, margin bottom, instead of margin. Okay, so let me go with margin vertical. Yeah, this looks good. So margin looks good now, and based upon this I can show the data of, let me just write a basic code to show the data, and then I think we can update accordingly. So whatever data we are getting, we need to store it somewhere. So I'm thinking that we should create a okay I'm still thinking it's better to get a workout logs. Okay, and whatever data here I'm getting, I just need to do this. Okay, so but how would I know that I have already pressed a button? Okay, so here my issue is that if user haven't selected any data, if user haven't pressed the show button, then why would I show that there is no data?
सो that will be only one toggle, right? अगर मैंने एक बार ही प्रेस कर लिया बिफोर दैट, ओके, सो अगर यूज़र ने एक बार ही री प्रेस नहीं किया है ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਟਸ ਓਕੇ ਫॉर मी, or I can have a clear button also that can just hide that data. Okay, so I think I should be having workout log or null, and default value should be the null, and here whatever data I am getting, it will be always this. So this will be some data. So here what I can do is instead of using const I can go with the where, but that will be important for me here. So where of type this and this is null, I can just trust this. So where could be type of this only, this will be always empty, and if there is no data then select an empty data, otherwise अगर error ही आ गया then why we are saying okay. So अगर let's say error आया है then error fetching log, please try again. Okay, so please try again, and in this case I think I don't need this line because अगर वो नहीं होएगा we will show it to the user कि साढ़े को डेटा ही नहीं है, एंड तो फिर गलत डेटा दिखाना ही क्यों है यूज़र ਨੂੰ। सो अगर डेटा नहीं है then set it to null and make it check it here. Oops. I don't want to rely on the flat list, but I don't think I have a better solution. But okay, I just want to show the dummy data, right? So let me just because I'm not making it look awesome or something, so I can just do workout logs and then this, and okay, so this is the type of workout. So in a workout, what is the structure that I'm following? Let me split to the right. Split right. So split right में I have to show a title. So the title should be a, I just need to show dummy data, right? Why I'm putting so much effort. So let me just go with the log.name. So it's a workout. Okay, why I'm seeing the workout plan, not workout log. So where is the workout log?
This is a workout log. Let me split into right. Just for right now, let me just fetch the workout ID, or let's just go with it. Okay, I think this is decent enough. Okay, so why it is not showing any data to me? It would be a console.logs, fetch logs. Am I fetching any data here? Oh, okay, might be उस एक्सरसाइज के लिए मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है. आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास 4 के लिए तो डेटा होना चाहिए. Really? I don't have any data for 4 also. So okay. Let me just confirm मेरे पास डेटा किसके लिए पड़ा हुआ है. ओके, सो मेरे पास डेटा वर्कआउट 5 के लिए है. एक्चुअली इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, कि पढ़ना चाहिए. फ़र्क वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे डेटा आ क्यों नहीं रहा. ओके, सो वाई फर्स्ट लॉग इज एम्प्टी. लेट्स फर्स्ट फिगर इट आउट. आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है. वी कैन जस्ट कॉल इट ऑफ एंड इस पर कल काम कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट स्पेंड 5 more minutes. ओके, सो वी हैव लॉग्स. हमने लॉग्स फेच कर दिए. लॉग फेच करने के बाद हमने टाइम स्टैम्प पे एक क्वेरी चलाई, स्टार्ट आफ्टर विच विल बी द 0 एंड दिस. वी कैन प्रिंट द डेटा हियर कि हमें डेटा क्या मिला है, एंड ऑल लॉग्स. ओके, सो console.log fetch all data. इस पे हम जस्ट वर्कआउट आईडी पे डेटा फेच कर रहे हैं. Okay, so this is one more optimization that we need to do, but that's not our concern right now. Oh, fetch logs in this. Let me just clean it up and hit this. So it's not getting any data for workout 5, but workout 5 के लिए डेटा एग्जिस्ट करता है, एंड इसका प्रूफ मैं खुद हूँ. बकवास. चल. Let me just print the data here. So console.log. Okay. Let me just check कि हमें डेटा क्या मिल रहा है. कमांड के शो डेटा. सो मेरे पास है workout_5, page is 1, limit is 10, exercise ID is this, set ID we actually don't care, user ID we have it. Oh yeah, I don't want to show user ID as much as I like.
सो मतलब तो आपने देख ही लिया है तो इट्स नॉट अ बिग डील राइट नाउ, बट पर्सनल डेटा, सो यहाँ पर तो डेटा फिर आना चाहिए ना, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र आईडी, देन वर्कआउट अंडरस्कोर लॉग्स अंडरस्कोर एक्स वर्कआउट स्लैश लॉग्स, and if I just remove these queries, then how this will respond? It still didn't get any data. Let me just, but it is getting other data, right? So सिर्फ इसी में इशू क्यों हो रहा है? Where is the collection? Let me just print log and snapshot. Okay. Explicitly order ID filter array F the source name explicitly ordered by array null path this what I'm fetching docs. Okay, comparator, we have docs, right? Comparator key sort map all docs, but then why this is empty? So यहाँ पर we are passing the in the get this I'm passing the collection, and collection में I'm doing the doc and fetching the data. Okay, so this is a query where I'm getting the get doc here in a collection. I think the issue is with the query only. In the collection I am passing the db and then db path. Okay, let me just go with this approach, and if this didn't work then I have one more approach to try it out. It's empty, right? Yep. First let's remove this. Okay, if this is how it is working, then let me see कि इसका डेटा इसको मिलेगा या नहीं if I go with this approach. Okay, होश वाले भी मत होश आए नजर. बट इट मीन्स कि इसके पास कुछ तो डेटा आया है डॉक्स में, बट उस केस में इसको नहीं मिला है. सो आई थिंक आई नीड टू गो विद द डिफरेंट क्वेरी ओनली. collection is not helping, so this is a backup log graph.
just copy the collection here where I'm passing db, then the user collection with user id, and then there will be a workout logs, right? So workout logs collection comma workout id comma logs collection. Okay, okay, so this is empty always. So if I just copy comment this much code, okay, and let me just try it out. Database and document. Okay, so अगर मैं workout logs से बदले I just go, instead of workout logs, if I go just workout in the same query, then I am getting the data. But if I'm going in a workout logs, then I'm not getting the data. Weirdo. So but I know data exists in the database. It's a workout underscore logs. ये तो सही है. It will be very huge and I know I will be disappointed when I tried it, but error fetching, pagination low, invalid collection refer must be an odd number of segments. Makes sense. Okay. I am seeing the data here. That's the actually most frustrating part, because I'm seeing the data in a database.
I'm not sure why I'm not able to fetch data from here. ओके सो आई थिंक लेट्स कॉल इट ऑफ. इसको अभी कल कंटिन्यू करते हैं. वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम but I think we need a proper debugging here. So thank you everyone for joining with me. Let's debug it tomorrow. I think we will be able to figure out कि query में ही कुछ issue है. Let's try and debug it tomorrow.